In continuation of the regressive policies and laws that the Federal Ministry of IT and Telecom and the Pakistan Telecommunication Authority, PTA, have been trying to impose on 230 million Pakistanis, the PTA issued a notice to Wikipedia that their services were being degraded for 48 hours, following which Wikipedia would be blocked in Pakistan. And now, it has been blocked. Wikipedia is run by the non-profit Wikimedia, and is the single largest repository of knowledge on a platform where information and knowledge is crowdsourced and updated in real time on any topic. Currently, there are more than 6.6 million articles in the English language, and millions more in other languages. Users need to create a profile to add information and edit it, on the condition that references are cited based on facts, something the PTA can also partake in. For the PTA to block the entire platform for Pakistani citizens based on an ego battle where one or two articles among millions is not being removed at their request is disproportionate, unconstitutional, and unfathomable in the 21st century. Such broad censorship undermines Pakistanis' right to access information, as well as their right to education. Educational concepts in all subjects will be inaccessible to Pakistani students. Healthcare updates will be inaccessible to students and doctors, and simple access to knowledge will require Pakistani citizens to violate another absurd policy against virtual private networks, VPN, that allow circumvention of censorship. There must be no legal avenue to block entire platforms like Wikipedia. PTA claims that a notice was sent to Wikipedia regarding sacrilegious content. When there is no transparency regarding the content in question, is it proportionate to block 6.6 million articles of knowledge because of one article that PTA finds objectionable? How many Pakistanis know of and have read the article in question? Would anyone have known had this not been made into an issue? When the economy is in a shambles, terrorism on the rise, and political instability increasing at home, is this really the priority of the regulatory authority? Blasphemy continues to be weaponized to no end in order to silence criticism of the expansive censorship mission the state has been on, while citizens continue to be held hostage by mobs that have been patronized over time for strategic and political goals. It is all the more concerning that the notorious removal and blocking of unlawful content rules 2021, known as the social media rules, under PECA, 2016, are being used to send notices to companies when they are under review by a parliamentary committee led by the federal law minister on the directions of the Islamabad High Court in April 2022. It is Pakistani civil society that submitted the petition to the court on the unconstitutionality of the rules that undermine basic freedom of speech and the right to information of Pakistani citizens, as guaranteed by Articles 19 and 19A of the Constitution. The government is on the record for stating that the social media rules are under review, based on recommendations of human rights organizations and the country's international human rights commitments, at Pakistan's Universal Periodic Review at the UN Human Rights Council recently. In light of this and the absence of a chairperson at the PTA, what legal mandate does the latter have to threaten Pakistani citizens and companies with blocking access to the world's largest encyclopedia and actually resorting to doing so? There has been confusion regarding the registration of Google's office in Pakistan. It was believed to be under the social media rules when it was actually a marketing office that was registered with the Securities and Exchange Commission of Pakistan. It would be prudent of Google to issue a clarification in this regard, so that undue government pressure is not put on other companies under the draconian rules that require local office registration with the PTA, with the aim of strengthening censorship of online content rather than encouraging economic benefits. It is important that Parliament removes Section 37 when reviewing PECA, as it enables undue censorship of content and requires the formulation of rules for doing so. It is for this reason that the constitutionality of the rules keeps coming into question. There must be no legal avenue to block an entire platform such as Wikipedia or TikTok. PTA and the IT Ministry should work to improve the IT sector, and not take us back to the Stone Age, when IT sector improvement and the ease of doing business can improve foreign direct investment. Censorship, including blocking websites and social media platforms, has set Pakistan back.
Is this the legacy PTA and IT Ministry want to leave behind? The writer is director of BOLOB, an advocacy forum for digital rights. Published in Dawn, February 5, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. वफाकी वजारत IT एंड टेलीकॉम और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA की जानिब से 23 करोड़ पाकिस्तानियों पर मुसल्लत की जाने वाली रजत पसंद पॉलिसियों और कवानीन के तसलसल में PTA ने विकीपीडिया को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि उनकी सर्विसेज 48 घंटों के लिए खराब की जा रही हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में विकीपीडिया ब्लॉक कर दिया जाएगा। और अब उसे ब्लॉक कर दिया गया है। विकीपीडिया गैर मनफत विकीमीडिया के जरिए चलाया जाता है और एक प्लेटफॉर्म पर इल्म का वाहिद सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है, जहां मालूमात और इल्म को किसी भी मौजू पर हकीकी वक्त में जमा और अपडेट किया जाता है। इस वक्त अंग्रेज़ी ज़बान में 66 लाख से ज़ायद मज़ामीन और दीगर ज़बानों में लाखों मज़ामीन मौजूद हैं। सारिफीन को मालूमात शामिल करने और इसमें तरमीम करने के लिए एक प्रोफाइल बनाने की ज़रूरत है, इस शर्त पर कि हक़ाइक़ की बुनियाद पर हवाला जात का हवाला दिया जाए, जिसमें PTA भी हिस्सा ले सकता है। PTA की जानिब से पाकिस्तानी शहरियों के पूरे प्लेटफॉर्म को अना की जंग की बुनियाद पर ब्लॉक करना, जहां उनकी दरख्वास्त पर लाखों में से एक या दो मज़ामीन नहीं हटाए जा रहे हैं, 21वीं सदी में गैर मुतनासिब, गैर आइनी और नाकाबिल फ़हम है। इस तरह की वसी सेंसरशिप पाकिस्तानियों के मालूमात तक रसाई के हक़ के साथ साथ उनके तालीम के हक़ को भी कमज़ोर करती है। तमाम मज़ामीन में तालीमी तसव्वुरात पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए नाकाबिल रसाई होंगे। सेहत की देखभाल की अपडेट्स तलबा और डॉक्टरों के लिए नाकाबिल रसाई होंगी। और मालूमात तक आसान रसाई के लिए पाकिस्तानी शहरियों को वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स VPN के खिलाफ एक और मुज़हका खेज़ पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने की ज़रूरत होगी, जो सेंसरशिप को नज़रअंदाज करने की इजाज़त देता है। विकिपीडिया जैसे पूरे प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का कोई कानूनी रास्ता नहीं होना चाहिए। PTA का दावा है कि विकिपीडिया को गुस्ताखाना मवाद के हवाले से नोटिस भेजा गया था। जब ज़ेर बहस मवाद के बारे में कोई शफाफियत नहीं है, तो क्या PTA के काबिल एतराज़ मज़मून की वजह से 6.6 मिलियन मालूमाती मज़ामीन को ब्लॉक करना मुतनासिब है? कितने पाकिस्तानी इस मज़मून के बारे में जानते हैं और पढ़ चुके हैं? क्या किसी को पता होता अगर उसे मसला ना बनाया जाता? जब मईशत खस्ता हाली का शिकार हो, दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा हो और अंदरून मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा हो, क्या ये वाकई रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरजीह है? रियासत की जानिब से वसी पैमाने पर सेंसरशिप मिशन पर होने वाली तनकीद को खामोश करने के लिए तौहीन रिसालत को किसी हद तक हथियार नहीं बनाया जा रहा है, जबकि शहरियों को ऐसे हुजूम के हाथों यरगमाल बनाया जा रहा है जिनकी तस्वीराती और सियासी मकासद के लिए वक्त गुजरने के साथ साथ सरपरस्ती की जाती रही है। ये बात और भी तशवीशनाक है कि पेका 2016 के तहत गैर कानूनी मवाद को हटाने और ब्लॉक करने के बदनाम ज़माना रोज़ 2021 को कंपनियों को नोटिस भेजने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जब अप्रैल 2022 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत पर वफाकी वज़ीर कानून की सरबराही में पार्लिमानी कमेटी उनका जायजा ले रही है। ये पाकिस्तानी सिविल सोसाइटी ही है जिसने आइन के आर्टिकल 19 और 19A के तहत पाकिस्तानी शहरियों की बुनियादी आज़ादी इजहार और मालूमात तक रसाई के हक़ को कमज़ोर करने वाले कवानीन के गैर आइनी होने के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। हुकूमत ने हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल में पाकिस्तान के यूनिवर्सल पीरियडिक रिव्यू में कहा कि इंसानी हुकूक की तंजीमों की सिफारिशात और मुल्क के बैन अल-अक़वामी इंसानी हुकूक के वादों की बुनियाद पर सोशल मीडिया कवानीन का जायजा लिया जा रहा है। इसकी रोशनी में और PTA में चेयरपर्सन की अदम मौजूदगी में PTA के पास क्या कानूनी मैंडेट है कि वो पाकिस्तानी शहरियों और कंपनियों को दुनिया के सबसे बड़े इंसाइक्लोपीडिया तक रसाई रोकने और हकीकत में ऐसा करने की धमकी दे। पाकिस्तान में गूगल के दफ्तर की रजिस्ट्रेशन के हवाले से इब्हाम पाया जाता है। ख्याल किया जाता था कि यह सोशल मीडिया कवानीन के तहत था, जब यह दरअसल एक मार्केटिंग ऑफिस था जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड था।
गूगल के लिए दानिशमंदाना होगा कि वो इस हवाले से वजाहत जारी करे ताकि दीगर कंपनियों पर उन जालिमाना कवानीन के तहत गैर ज़रूरी हुकूमती दबाव न डाला जाए जिनके तहत पीटीए के साथ मकामी दफातर की रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, जिसका मकसद माशी फ़वाइद की हौसला अफजाई करने के बजाय ऑनलाइन मवाद पर सेंसरशिप को मजबूत बनाना है। ये ज़रूरी है कि पार्लियामेंट पेका का जायजा लेते वक्त दफ़ा 37 को हटा दे क्योंकि यह मवाद पर गैर ज़रूरी सेंसरशिप को मुमकिन बनाता है और ऐसा करने के लिए कवायद की तश्कील की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि कवायद की आईनी हैसियत पर सवाल उठते रहते हैं। विकिपीडिया और टिकटॉक जैसे पूरे प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का कोई कानूनी रास्ता नहीं होना चाहिए। पीटीए और वजारत आईटी को आईटी के शोबे को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए, न कि हमें पत्थर के दौर में वापस ले जाना चाहिए, जब आईटी के शोबे में बेहतरी और कारोबार करने में आसानी बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को बेहतर बना सकती है। वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने समेत सेंसरशिप ने पाकिस्तान को पीछे धकेल दिया है। क्या यही विरासत पीटीए और वजारत आईटी पीछे छोड़ना चाहती है? मजमून निगार डिजिटल हुकूक के लिए काम करने वाले फोरम बोलो भी के डायरेक्टर हैं। अखज़ शुदा बतारीख 5 फरवरी 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.